Hello future doctors, this is UJJAL ROY, biology mentor, director and founder of the Engineers Gurukul. Today I have come up with another video on the next very topic about the living world. Last day we have talked about, in the last video we have talked about the living world. Today we are going to talk about the next level of the living world, which is called taxonomic categories. Fine. And see, this taxonomic categories is again going to be very, very important for you, because you are also going to expect many of the questions coming in NEET examination, and also this is going to be very much important for your board examination as well. Okay, so let us start with the topic called taxonomic categories. Yes, so let us start with the topic called taxonomic categories. So taxonomic categories is again a very, very important topic. I said taxonomic category. What is the meaning of taxonomy? First we have to understand that. What is the meaning of the term taxonomy? Taxonomy किसको कहते हैं? Taxonomy देखो, there are 3 points, 3 points है. पहला point ये है कि वो है identification. Fine. किसका identification वो बाद में बात कर रहे हैं. पहले point को समझ लो. First point is identification, second is classification, and third one is nomenclature. Now, what is identification? Identification of some characters. उस कैरेक्टर को देखने के बाद क्या करना, उसको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करना और उसके बाद उसका नेमिंग करना. ये तीनों प्रोसेस को एक साथ लेकर क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी. नाउ ये क्यों चाहिए? व्हाई टैक्सोनॉमी इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइवर्सिटी? सी बाबू, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस. Variations. So there are variety of organisms, है ना? Variety of organisms, variations, and what is the reason for this diversity again? Diversity का कारण क्या है? बोलो, sexual reproduction या asexual reproduction? It is due to sexual reproduction that variation is possible, and that variation is called diversity in the living world. कितने सारे species आज तक, approximately कितने सारे species आज तक discover किया गया है? वो है close to 1.7 to 1.8 million species. So till date, these many number approximation, these many number of species have been discovered here. तो उसको क्या करना है? हमें different taxonomical categories में उनको classify करना है. और उसके लिए हमें क्या जानना है? Identification क्या है? Classification क्या है? Nomenclature क्या है? वो हम जानेंगे. उसके पहले, who is called as the father of taxonomy? It is Sir Carolus Linnaeus. So who is called as the father of taxonomy? Sir Carolus Linnaeus. Let us get into the next topic, जहाँ पे हम आइडिया देंगे what is called identification. अब देखो, identification में मैंने यहाँ पे 3 different species को थोड़ा सा दिखाया है. एक है, say some of the organisms they look like this. Some of the organisms they look like this. So I've just shown you. Say these 3 organisms they have scales on their body. उसके body में क्या है? इनके body में scales है. तो हम बाहर से scales जब देखेंगे तो वो कौन सा कैरेक्टर रहेगा? वो रहेगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना? सो बाहर से जो देखते हैं, द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो स्केल्स है, तो हमने उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया? हमने क्लास रेप्टिलिया के अंदर क्लासिफाई कर दिया. देन ये 3 ऑर्गेनिजम्स को मैंने दिखाया आपको, ऐसे गोल गोल हैं, एंड दे हैव गॉट मॉइस्ट स्किन. स्किन कैसा है? भीगा हुआ है, मॉइस्ट स्किन है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर है. तो क्या कहेंगे? इस कैरेक्टर को देखने के बाद हमने उसको क्लासिफाई कर दिया इनटू क्लास एम्फीबिया. देन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये देखो ये 3 ऑर्गेनिजम्स, इसके बॉडी में हेयर्स हैं. तो अगर हेयर्स हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसको देखकर हमने क्या किया? उसको क्लास मैमेलिया में हमने क्लासिफाई कर दिया. नाउ कैन वी सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द चेंबर ऑफ द हार्ट दे हैव? अगर हार्ट का चेंबर देखना है तो हमें उनके बॉडी को काट के देखना है, एंड that point is called, those characteristics are called anatomy. So what are anatomy? Anatomy are internal, the study of internal organs. And you my future doctors, डॉक्टर बनने के बाद जब फर्स्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो लगेगा आपको, वो है एनाटॉमी क्लास, जहां पे यू आर गोइंग टू डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन बॉडी काटने के बाद क्या देखोगे? इंटरनल कैरेक्टर देखोगे, सो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. और मॉर्फोलॉजी है बाहर का कैरेक्टरिस्टिक्स. सो से फॉर एग्जांपल ये 3 क्लासिफिकेशंस
तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने कर लिया बाय व्हाट, बाय आइडेंटिफाइंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसके बाद क्या आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा फिर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस बेसिस के ऊपर हमने इन तीनों कैटेगरी के एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब देखो सोचो ये ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल में है वो लिजार्ड है, फाइन, और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डायनासोर है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, what is common in both of these organisms, lizard which is hemidactylus and dinosaur which is tyrannosaurus. One of the example of dinosaur is Tyrannosaurus rex, T-rex. अब सोचो इन दोनों को मैंने एक ही क्लास में क्लासिफाई कर दिया, एक ही रूम में भेज दिया दोनों। अब क्या काम है, क्लासिफाई तो कर दिया, अब किसको प्रॉब्लम हो रहा है, उस रूम से आवाज आ रहा है दोनों में झगड़ा चल रहा है, लिजार्ड और डायनासोर के अंदर झगड़ा चल रहा है। तो सोचो मैं हूं कैवलस लीनियस, आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर रूम, और वहां पे रूम खोलने के बाद डायनासोर केम अप एंड सेड सर ये बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ, एक ही रूम में हम दोनों एक साथ कैसे रख सकते हैं सर, सी द साइज ऑफ माइंड। डायनासोर बोल रहा है मेरा साइज देखो सर, मेरा साइज इतना बड़ा है, डैगर शेपेड टीथ है, इतने बड़े बड़े 2 फुट के टीथ हैं, और ये देखिए सर ये लिजार्ड विद दिसा, ये मेरे साथ एक ही रूम में, सर ये तो नाइंसाफी है सर। सो व्हाट इज द नीड, द नीड इज, ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे चलो रेप्टिलिया सब चले आओ पास और सब पहले जाएगा लिजार्ड उसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा, सर ये ऐसा कैसे हो सकता है। सो रेप्टाइल में क्या चाहिए, डायनासोर क्या सोच रहा है, लिजार्ड क्या सोच रहा है कि उनको नाम से पुकारे, सो उनको नाम से पुकारे, सो नाम से पुकारने को क्या कहेंगे हम, नेमिंग सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। So what is the third term? The third term is nomenclature, where we need to talk about, we need to name them, and that is called nomenclature. इस nomenclature में the term is called bionomial nomenclature. Binomial nomenclature. Bi मतलब क्या है, two. Nomial मतलब naming. So there is a two-term naming system. Who gave it? Sir Carolus Linnaeus wrote in his book Systema Naturae. In his book Systema Naturae, he gave the concept of binomial nomenclature. He classified organisms into two particular names. बोल रहे कि हर एक organisms का दो word का name होगा. The first one should be generic name and the second one should be specific epithet. Now बाबू listen to me very carefully. Mind you, हम सब जानते हैं जीनस और स्पीसीज है, पर ये याद रखना है उस जीनस टर्म को कहा जाता है जेनेरिक नेम और स्पीसीज टर्म को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट. Now so binomial nomenclature में मैंगो को हम कैसे बुलाएंगे? We are going to call mango as Mangifera indica. The potatoes we are going to call them as Solanum tuberosum. Solanum tuberosum. देखो ये सब कॉमन टर्म्स हैं जो हमको याद रखना है फॉर नीट एग्जामिनेशन. मैं कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा. नाउ यहां पे देखो, आप जानते हो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, ये जीनस नाम का जो फर्स्ट लेटर है मैंगो का, मैंगीफेरा का फर्स्ट लेटर ये कैपिटल लेटर में है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में है. यहां पे भी देखो सोलानम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में है, ट्यूबरोसम का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में है. डेफिनेटली कुछ रूल है. व्हाट इज द रूल? द रूल इज अबाउट Sir Carolus Linnaeus wrote two books. One is Species Plantarum, another one is Systema Naturae. Species Plantarum, in his book, he named close to 5,900 species of plants. And in his book, Systema Naturae, he wrote the name of some 4,326 species of animals. Now, आपके मन में क्या आ रहा है? ये नंबर आपको याद रखना है कि नहीं? देखो बाबू, it's very tough to remember the number of species, but the name of the book is very, very important. That is Species Plantarum and Systema Naturae. Now, let us talk about another book written by Bentham and Hooker. Book Genera Plantarum was given by Bentham and Hooker. हम बाद में पढ़ेंगे Bentham and Hooker classification. Book Genera Plantarum. Fine. अब ये आ गया. Term Phylum was given by Ernst Haeckel. The term Phylum was given by Ernst Haeckel. Definition of biological species was given by Ernst Mayr. Now, बाबू देखो एक चीज, हर एक
हर एक यूनिट के पहले आपके एनसीईआरटी में कोई साइंटिस्ट का नाम रखा हुआ है। देखो यहां पे लिविंग वर्ल्ड के पहले अर्नस्ट मेयर के संबंध में दिया गया है। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू स्टडी व्हाट आर द बुक्स ही रोट, व्हाट कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नीट में याद रहे, नीट में ये सब क्वेश्चंस भी करते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, जब आपको लगे कि जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे क्वेश्चंस वहीं से आएगा, क्वेश्चंस वहीं से आएगा। जो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट साइड। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज अर्नस्ट मेयर। लेट अस कम इनटू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर was given by Sir Carolus Linnaeus, who is called as the father of taxonomy. उन्होंने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एज वेल एज फॉर नीट एग्जामिनेशन। साइंटिफिक नेम्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन लैटिन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ईच नेम शुड कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। थर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, दैट इज मैंगीफेरा, M capital. While first letter of the species name should be written in small letter, that is indica. See, indica is small letter. Next, the scientific name should be written in italics. Italics कब? जब क्या रहेगा, printed form में रहेगा, in printed form. But if handwritten, the generic and specific epithet should be always underlined separately. याद रहे, एक साथ नहीं रहेगा, दो वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. So you have to underline them separately. These are the points, the rules of binomial nomenclature. The main thing that we are missing right now in this page, वो बोलो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहीं पे गलती होता है, और वो है this point. What is this point? This point is the name of the author who described the species. The name of the author who described the species must be present at the end of the specific name. Specific name के एकदम पीछे by a standard abbreviation, और वो क्या है, Mangifera indica Lin. Lin has come from the term, Lin stands for Linnaeus. So the author who has given the name, you have to always write after the scientific name being written, उसके बाद आपको in abbreviation form उसका नाम, उनका नाम लिखना है आपको, that is Lin. So this is most important, mind you, this is the most important point about the rules of binomial nomenclature. Normally students इसको मिस कर जाते हैं, आप लोग मिस नहीं करोगे. Okay. Taxonomy plus phylogeny together makes what? Systematics. So you got a new term now. You got a new term, and the new term is phylogeny. इस बुक में यहाँ पे इस चैप्टर में phylogeny का नाम डिस्कस नहीं किया गया है. Now what is phylogeny? Phylogeny means evolutionary relationship. Phylogeny means evolutionary relationship, and this relationship depends upon what? 4 factors: structural relationship, biochemical relationship, psychological relationship, embryological relationship, and fossil information. इतने सारे पॉइंट को लेकर अगर टैक्सोनॉमी के साथ उसको आप सोचोगे, then it becomes systematics. So systematics is a broad version of taxonomy. Systematics is a broad version of taxonomy. Mind you again, taxonomy and systematics are not same. So you have to consider, along with taxonomy, you have to consider phylogeny with all these points together. Fine, these two together is called systematics. Now come down to the taxonomical hierarchy. Star mark for NEET examination. Star mark for NEET examination. 2022. If you check 2022, if you check, you will be getting this particular. You are going to get this particular question being asked from this hierarchy. What is it? कैसे याद रखेंगे hierarchy को? Taxonomical hierarchy को क्या कहा जाता है? Linnean hierarchy. Linnean has come from the word Linnaeus. It's called keep pot clean, otherwise family gets sick. Keep pot clean, otherwise family gets sick. What is keep? K for kingdom, P for phylum, pot for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus, S for species. This is how you can remember it, and we have to remember it in ascending order. So नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. So each category is also called as taxon. So हर एक category क्या है? Taxon है. So बच्चों मुझे बोलो, एक सबसे lower taxon कौन सा है? Species. सबसे higher category का taxon कौन सा है? Kingdom.
So you have to remember by keep pot clean, otherwise family gets sick. This is a very normal way that we can remember it. In plural, many of the taxon together makes what? Taxa. Many of the taxon together makes taxa. So this is about the taxonomical hierarchy. Now come down to the next topic, which is called as species. सबसे lower category है species. So what is species? It is the lowest taxonomic category and basic unit in biological classification. So क्वेश्चन करेंगे आपको नीट एग्जामिनेशन में बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है. Whenever they talk about the basic unit, you cannot talk about the higher category. You have to always consider about the lowest category, and that is species. That is species. Definition of species. क्या है definition of species? Again आप बोलोगे group of related individuals. Group of related individuals having same morphology. बाबू यहाँ तक सीमित नहीं है. देखने में सेम है, एक ही स्पीसीज के हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो होना ही है, but they should interbreed among themselves. They should be capable of interbreeding within themselves and producing fertile offspring. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. डोंकी और हॉर्स, इन दोनों के क्रॉस से हमें क्या मिलता है? म्यूल फर्टाइल है या इनफर्टाइल है? इनफर्टाइल है. सेम स्पीसीज हुआ? नहीं हुआ. So definitely species मतलब species are a group of organisms with similar morphological characters and they should be capable of interbreeding and producing fertile offspring. Example Panthera leo, किसका है? Scientific name lion का. Solanum tuberosum पहले भी देख लिया हमने, potato. So ये these are the examples of what? Species. So species is the lowest category. उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है genus. उसके ऊपर क्या है? genus. So what are genus? Genus are a group of closely related species. So higher category above level of species. So question क्या जाएगा? What is the higher category above the level of species? It is genus. Now genus का कुछ examples दिया गया है. One is Solanum tuberosum, which is potato. अब देखो next one Solanum melongena brinjal का scientific name. Panthera leo, lion. We have seen this. Panthera pardus, leopard का scientific name है. Panthera tigris, ये tiger का scientific name है. Now यहाँ पे आपको जीनस क्या क्या कॉमन मिला? पैंथेरा का 3 और यहाँ पे 2 सोलानम का सेम जीनस, बट द स्पीसीज आर डिफरेंट. दैट मींस अगर स्पीसीज डिफरेंट है, इसमें तो कुछ कैरेक्टर्स तो कॉमन है, इसीलिए ये सोलानम के अंदर में है. इन तीनों कैट फैमिली में कुछ तो कॉमन है, इसीलिए इट हैज कम इनटू पैंथेरा. सो पैंथेरा इज द जीनस विद अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मेक्स व्हाट? जीनस. फाइन बाबू. So ये था about genus. Next comes family. Now when we talk about family क्या होगा? Group of related genera. Same genus, group of related genus together makes what? Family. And who are they? They are more similar to each other than to the genera of other families. Family, Felidae. जब भी सुनोगे फेलिडी, आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कैट, फेलिडी. क्योंकि फेलिडी ये जो घर में हम ये जो पेट रखते हैं कैट, उसका नाम है फेलिक्स कैटस और फेलिक्स डोमेस्टिकस. बट दिस इज अ लेपर्ड कैट विच इज वेरी वाइल्ड इन नेचर. ये नॉर्मली हम पेट में रखते हैं फेलिक्स बेंगालेंसिस. सो आपको यहां पे क्या मिल गया बाबू? फेलिक्स, सेम जीनस मिल गया. But mind you, they come under the same family, under family Felidae. If you compare between cat and dog का क्या नाम है? Canis familiaris, ये आपका पेट डॉग है. Canis lupus, ये वुल्फ है. Canis aureus, ये फॉक्स है. But all these dogs, they come under the same family called Canidae. Same family called Canidae. So we got to understand about two different family. One is Felidae, one is Canidae. और इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है लॉन्ग कैनाइन. खाते क्या है बाबू? घास खाते हैं या मांस खाते हैं? मांस खाते हैं. They feed on flesh.
they are flesh eaters. That means they are carnivores. They are carnivores. अगर carnivores हैं, family के ऊपर क्या है? Family के ऊपर है order. Family के ऊपर क्या है? Order. Family के ऊपर है order. तो order में cat का family और dog का family कैनिडी दोनों किस order में आ रहा है बाबू? Carnivora. So what is order? Order is a category of related families. Order is a category of related families. So what is the order? The order is Carnivora. चलो थोड़ा सा पहले से देख ले, ऊपर देख ले प्लांट्स का कुछ फैमिली का नाम. Rice, maize and wheat. Rice, maize and wheat, they come under a common family called Poaceae. So in plants, the suffix C, C means family. So family का नाम क्या है? Poaceae. Now rice का scientific name is Oryza sativa. Maize, Zea maize. Wheat, Triticum aestivum. These three comes under the family Poaceae. So family in plants suffixing with AC. क्या क्या एग्जांपल हो सकता है फैमिली का? Solanaceae, I think you have heard about this. Fabaceae, you have heard about this. Liliaceae. Fine. So ये Solanaceae, Fabaceae, Liliaceae, these are the examples of families. So just now we have talked about the order Carnivora. Now order. अब देखो वो दो, ये तो दो एनिमल के एग्जांपल दे दिया आपको. We have given the examples of cats and dog. Family of cat is called Felidae. Family of dog Canidae. Together they come under order Carnivora. थोड़ा देख लेते हैं plants के बारे में. Plants में family क्या है? Rosaceae. Rosaceae और ये family है Fabaceae. अब Rosaceae और Fabaceae दोनों कौन से ऑर्डर में आते हैं? Rosales. कौन से ऑर्डर में आते हैं? Rosales. A-L-E-S. The word suffixing with ales, A-L-E-S, means they come under order. They come under order. They come under order. And mind you, when we talk about Rosaceae, some of the examples I have given are these: almond, strawberry, blackberry, plums, pear and apple. Over here, legume, bean and pea comes under Fabaceae. तो ये दोनों में क्या है? दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है. वो सिमिलरिटी किस ऑर्डर में आ जाएगा? Rosales में. So this is the order called Rosales in plants. Now, class. The next one is class. Again, what is class? Order के ऊपर class है. So category of several related orders. Category of several related orders. Like order Primata and order Carnivora. देखो cat and dog आ गया. Cat and dog आ गया Carnivora के अंदर. और देखो monkey, gorilla, gibbon, human, हम सब किसके ऑर्डर में आ गए? ऑर्डर प्राइमाटा. सो ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमाटा, कुछ तो कॉमन है हम दोनों में. क्या कॉमन है? बोथ ऑफ अस वी कम अंडर क्लास मैमेलिया. कैट, डॉग, टाइगर, दे आर मैमल्स. गिबन, monkey, gorilla, human, all are mammals. So we come under class mammalia because we have what is common from outside. If you see, we have common in ear pinna, we have common in hairs on our body. और क्या कॉमन है? कॉमन है mammary glands, presence of mammary glands. तो ये था order. ये था order. So order. Next comes group of same type of order together makes what? Phylum. So phylum is a category of a related class. Related class. So now what is class? Class means class Pisces, amphibia, reptilia, aves and mammals. और class in plants are dicotyledony, monocotyledony. देखो यहाँ पे phylum के अंदर में कितने सारे क्लास हैं? Pisces हैं, amphibia है, reptiles हैं, aves हैं and mammals हैं. अब ये क्लास है, बहुत सारे same type of class together makes what? It comes under a phylum called Chordata. So what is common between all these organisms? Pisces, ये उसका Pisces का embryonic stage है. Reptile का ये embryonic stage है. ये embryonic stage है. अब देखो ये दोनों embryonic stage में देखने में से common लगेगा क्योंकि दोनों में क्या है? Notochord है. Then both of them they have got nerve cord. They have got pharyngeal gill slits. So that is common. So they come under phylum Chordata. Under the देखो phylum हम animal के बारे में कह सकते हैं. We can call phylum in case of animal kingdom. But in case of plants, the same phylum is called as division. यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए. Division is the other term for phylum in case of plants. Now in case of plants, under division angiospermy. Under division angiospermy, there are two classes. One class is dicotyledony, जिसको हम dicot कहते हैं. Another one is called monocotyledony, जिसको हम monocot कहते हैं.
And in plants, the phylum is replaced by division. Hopefully this is okay for you. This is about phylum. और phylum से ऊपर कौन जाएगा? सबसे ऊपर कौन है? Kingdom. So kingdom is highest category of related phylum or divisions. जहाँ पे क्या है? Kingdom Animalia and Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Under Kingdom Animalia, we know that all multicellular eukaryotes, but heterotrophs comes under Kingdom Animalia. But when we talk about Plantae, all multicellular eukaryote but autotrophs, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको आप कहाँ पढ़ेंगे? Kingdom Plantae. यहाँ पे कितना kingdom देख लिया हमने? We have seen 2 kingdom classification, है ना? 2 kingdom classification. But बच्चों ये 2 kingdom classification तो हम नहीं पढ़ेंगे. हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में? In the upcoming video of bio classification, हम क्या पढ़ेंगे? We are going to talk about different classifications of the kingdom. 2 kingdom पढ़ेंगे, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 6 kingdom classifications. So ये सब पढ़ेंगे हम कौन से टॉपिक में? In the upcoming video of biological classification, we are going to take care of all this. Now, this is about kingdom. This is about kingdom. Now, the next one is the systematic position. Systematic position of human housefly. देखो क्या कॉमन है? Human और housefly दोनों एनिमल किंगडम में आएगा. So kingdom दोनों देखो दोनों में एनिमलिया कॉमन है. But in case of phylum, this is human comes under chordata, but the phylum of housefly comes under arthropoda. आप जानते हो arthro has come from the term arthrology. What is arthrology? The study of insects. The study of insects comes under arthrology. Arthro मतलब क्या है? Arthro मतलब joint. Arthro मतलब joint. Arthrology is study of joint. And arthropoda, poda means legs. So jointed legs is about insects. Now class क्या है? For human it is mammalia. But for housefly class कौन सा class है? Insecta. Order for human is primata. अच्छा बच्चों आप जानते हो प्राइमाटा और नॉन प्राइमाटा का डिफरेंस क्या है? इन क्लास 12 इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है ऑर्डर प्राइमाटा शोज मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट तो टाइगर, कैट, दे आर नॉट, they never come under order primata. They are non primates. अब नॉन प्राइमेट्स वहां उनका ऑर्डर क्या था? कार्निवोरा. तो कार्निवोरा क्या दिखाता है? कार्निवोरा never shows menstrual cycle. They shows estrous cycle. They shows estrous cycle. So we are going to talk about that later. Okay. Now, see ये order primata है. Family Hominidae. What is the meaning of Hominidae? Human-like appearance. देखो human की तरह देखो. So अगर human-like appearance है तो वो Hominidae. And then genus Homo and species is Sapiens. But when we talk about housefly, what is the order? The order is Diptera. Now, what is Diptera? What is the meaning of? Again, this is my question to you. Just answer me in the comment section. Di plus tera. What is the meaning of that? Di plus tera. So you have to answer it in my comment section. Yes, Diptera. It's having some importance. Come now to the next family is Muscidae, or ये Musca domestica is the scientific name of housefly. So this is about animal. What is the last topic? The last topic is about the 2 plants being given in your book. One is mango, and the one is wheat. What's the difference? You know, mango is a dicot. Mango is a dicot, and wheat is a monocot. But what is common between both of them? Both monocot and dicot comes under angiosperm. तो क्या बोला गया था? अभी आपको क्या समझाया गया बाबू? Group of related class makes what? Division. So दोनों angiospermy है. और what is kingdom? They come under the same kingdom called kingdom plant. But what is the order of mango? Sapindales. आपको बोला गया था ना, suffix क्या होना चाहिए? Order में the suffix should be always with ales. And family Aci, क्या? Anacardiaceae. So family क्या है? Anacardiaceae in mango. The genus is Mangifera indica. And over here Poales, again ALES. Poaceae, again AC. So they come under Poaceae family. And then the genus is Triticum aestivum, the scientific name of wheat. Now, this is everything about taxonomic categories. Now, mind you, there are 2 terms, ICZN and ICBN. Do find this topic from NCERT
And tell me in the comment section what is ICBN and ICZN. ICBN and ICZN. It's very, very important for NEET examination. These are some of the great institutions which has made the binomial nomenclature. So you need to discuss about that and you have to answer me in the comment section. Yes, dear students, do subscribe, share to all your friends, and if you like it, then I'm going to come up with some new videos about the biological classification, which is again the most important chapter for NEET aspirants, because last year also, if you just go through last year question paper, from only classification, biological classification, 3 questions came up from classification chapter. So I'm going to look forward for the next video. So all the best. Thank you.